Hi friends, welcome to my channel Basic Studies. So समस्त जानथिबा आमे प्रिपेयर होचे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जहां हमर पेडागोगी सेक्शन रे आस्तिला प्रीवियसली. तो प्रीवियस वीडियो रे 2016 2018 रा आमे पूरा प्रॉपर्ली इलाबोरेशन अनुसार आमे कोन करछे प्रैक्टिस करछे. तो आज रो एटा होची 2021 रो सेकंड पार्ट. येला सेकंड पार्ट ता जोडा हेतिला बेसिकली जाकी 2022 मध्य को जाउची. ठीक अछि. तो बाकी बहुत जल्दी आस जीवो बाकी सब जाक जति कि हमरो अछि हेछि जहा क्वेश्चंस जति कि एग्जामिनेशन हेछि तारे सब जाक PYQ. तो PYQ प्रैक्टिस कले कोन गोटा आईडिया क्लियर हे जो को प्रकार क्वेश्चन आछे हमरो एग्जाम रे एंड आमे को प्रकार से क्वेश्चन को टैकल करबा एंड देखिबा जो देखा जाय 2016 18 रे बहुत क्वेश्चन रिपीट मध्य हेछि. ठीक अछि. तो अला सेक्शन रे मध्य रिपीट हेछि. तो सेही अनुसार हम कोन हो गोटे माइंडसेट रहि जिवो. फॉर एग्जांपल देखिया प्रत्येक वर्ष मैस्लोर गोटे क्वेश्चन कंफर्म आछी. ठीक अछि. मैस्लोर गोटे क्वेश्चन कंफर्म आछी. से अनुसार पियाजेट रो स्टोरी देखियो ताई भीतर गोटे क्वेश्चन कंफर्म आछी. तो एमिति केतरा सेक्शन अछि जायरो कि क्वेश्चन कंफर्म आछी. तो सेही सेक्टर जाको जदि हम भला टिक प्रिपेयर हेजवा तो ऑटोमेटिकली आराम से हमर कोन आसीबो 40+ ही मार्क आसीबो. ओके 40+ कहीं कि मु 10 कम कहूची बिकॉज केतरा स्पेसिफिकली डेफिनेशन पचार दोची को साइंटिस्ट कोन कहिथिले बा साइकोलॉजिस्ट कोन कहिथिले. तो सेही जिंसा को टिके एपियर करबा समस्त पई सहज नुह. ओके बाकी सब ए प्रकार इलाबोरेशन टाइप रो जदि आछ माने आराम से कोन करियो 40 मार्क तो आराम से आसी जिवो. चलो देखियो फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. ए भितर कोडा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रो कैरेक्टरिस्टिक्स नुह. सब बेले जेतले देखियो क्वेश्चन रे प्रत्येक वीडियो रे मु कोन कहिछि नॉट जेतले अछि से पाखरे अंडरलाइन करबो. जेतले नॉट पाखरे अंडरलाइन हला तो माइंड रो क्लियरिटी आस जिवो जे कोन पचारछि. नले विशेष तो कोन हबो क्वेश्चन पढ पढ हम आंसर जे राइट अछि सेडा करिके आस जिबार हबो. देखियो ऑप्शन जा कोन कहला इट्स डिजाइन इज एक्सप्लेनेटरी एक्सप्लोरेटरी एंड क्वाइट फ्लेक्सिबल. ओके next it seek to identify influential variables. It monitor teaching learning strategy during instruction. It is almost unobstructive and non reactive. तो ए भितरु कोटा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन नुह. देखो क्वाइट फ्लेक्सिबल एक्सप्लोरेटरी तो हबो ऑब्वियसली काहे ना सेही प्रकार इवैल्यूएशन हमर होची फॉर्मेटिव रे. देन आइडेंटिफाई इन्फ्लुएंशियल वेरिएबल्स ऑब्वियसली वेरिएबल्स तो निहाती रहइबो. मॉनिटर टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन. यस को अनुसार आमे कोन करछे प्रिपरेशन करूछे इवैल्यूएशन से अनुसार आमे कोन करिया गोटे ब्लूप्रिंट अनुसार आमे काम करछे. बट नॉन रिएक्टिव तो हबनी अनऑब्स्ट्रक्टिव एंड नॉन रिएक्टिव हबनी. तो आर आंसर हबो डी. नेक्स्ट 102 according to whom a short answer essay item is one in which the examinee supply the answer in 1 or 2 lines. short answer अछि माने 1 or 2 line हेतिबो and is usually concept. ए प्रकार concept जा के दिथिले ठीक किछि बुझेबा जिंस नै हमें मन रखिया पड़िबो. मार्शल एंड हेल्स दिथिले ए प्रकार concept. नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ pre-service and in-service training of teacher develop and disseminating innovative educational. किए दोची प्री सर्विस और इन सर्विस मान को किए कौन करछि एजुकेशनल टेक्निक अनुसार से मान को ट्रेनिंग दिया होछि. ट्रेनिंग किए ऑर्गेनाइज करछि NCT. देन नेक्स्ट क्वेश्चन which one of the following is a good example of learning of a problem solving task till the student able to do it by themselves. वितर कोडा प्रॉब्लम सॉल्विंग जाय रे कि स्टूडेंट एबल हो निजे निजरो काम करिया पे. ऑफरिंग ए रिवार्ड और सॉल्विंग द प्रॉब्लम क्विकली. टेलिंग देम दैट दे कैन डू इट बाय ट्राइंग अगेन एंड अगेन. प्रोवाइडिंग ए हाफ सॉल्व्ड एग्जांपल. टेलिंग देम दे कांट गो होम टिल दे सॉल्व द प्रॉब्लम. देखो ए प्रकार जतले नेगेटिव प्रकार आंसर थिबो से केबे भी OSTET एग्जाम रे विशेष तो देखियो जोठी नेगेटिव आंसर थिबो से केबे भी आंसर हे नथिबो. ठीक अछि. तो ये तो हबनी. ठीक अछि. टेलिंग देम दैट दे कैन डू इट बाय ट्राइंग अगेन एंड अगेन नाइ हबनी. देन से मानको कोन करिया ऑफरिंग रिवार्ड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम क्विकली. ये मधु वन काइंड ऑफ नाइ हमें कोन करिया किछटा गोटे तांको हेल्प करिया माने हेल्प मींस कोन फर्स्ट एग्जांपल किछटा सॉल्व दबा जो द्वारा कि से माने कोन करबे निजरो क्वेश्चन निजे करि पाइबे.
जदि आमे तांकु 2 into 2 को प्रकार मल्टीप्लाई हेले 4 होछि जदि आमे बुझे देले एग्जांपल वाइज तो ऑटोमेटिकली से माने कोन 2 into 3 कर दे परिबे ओके 2 into 4 करि परिबे जदि आमे को प्रकार तांकु एग्जांपल अनुसार बुझे नथिया तो डायरेक्ट जतोले दबा तो से माने करि परिबेनी बिना गुरु रे कोन पाठ हो कि नाही नेक्स्ट द प्रोमोटिंग मेथड ऑफ मेमोरी टेस्टिंग इज क्रिएटेड बाय इपुरसी एमती डेफिनेशन जा मन रखिया हुई पड़िबो जदि बहुत किछि माइनस मार्किंग तो नहीं चलो कोडा ही मारी आसीबा देन टू व्हिच ऑफ द कोलबर्ग स्टेज एम्पैथी एंड प्रो सोशल बिहेवियर एटा प्रो सोशल ओके प्रो सोशल बिहेवियर आर मोस्ट क्लियरली रिलेटेड प्री कन्वेंशनल कन्वेंशनल पोस्ट कन्वेंशनल सेम कोलबर्ग ऊपर क्वेश्चन 2018 रे आस्थिला 16 रे मध्ये थिला बट डायरेक्ट नथिला ओके तो आर आंसर हम कन्वेंशनल एथिक्स ओके तीनटा स्टेज रोची कोलबर्ग रो गोटेला प्री कन्वेंशनल कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल याला स्टेज 1 2 3 4 5 6 ठीक अछि नेक्स्ट ए स्केल with a set of point which describe varying degree of the dimension of an attribute under observation is known as आको आमे कोन बोली कहूचे रेटिंग स्केल बोली कहूचे आको एप्टीट्यूड स्केल नुहो कि एल्टीट्यूड स्केल नुहो क्वेश्चनर नुहो आको आमे कोन बोली कहबा रेटिंग स्केल आमे रेटिंग दोचे ना तो रेटिंग स्केल देन अकॉर्डिंग टू साइकोएनालिसिस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन माने फ्रूड कथा एठी कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू ए भितरु कोटा ट्रू man's behavior is directed by his will and that the will is motivated by intellectual evaluation motivation is an element of the highest importance in the process of learning human behavior is inspired by the desire lying concealed in the unconscious and subconscious mind ha ye hobo unconscious and subconscious mind of the individual eta ke koithile freud koithile okay definition of one kind of motivation next अच्छा एठी गोटे जिनस देखो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स का कथा एठी कहूची मैस्लो कथा कहूची चलो नेक्स्ट कहला there should be more varied mode of assessment beyond the examination hall paper pencil test was recommendation of NEP 2020 2005 1986 1992 pen pencil test एटा थिला NCF 2005 ओके आंसर होबो NCF 2005 CC रु मध्ये क्वेश्चन उड कंफर्म पड़छि सब बळे नेक्स्ट क्वेश्चन हला द एसे टेस्ट possesses relatively low validity and reliability because of the following essay test पूर्व आमे कोन करथले पूरा इतिहास अनुसार आमे लिखि चलथले ओके बट एबे बे चेंज इवन मने जानिथिबे शायद आगरे कोन थिला जतले आमे +3 पाठ पढुथलु सेतले कोन थिला हमर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर थिला ओके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आमे कोन करथलु लॉन्ग क्वेश्चन पढिथियो गोटे 20 मार्क 5टा क्वेश्चन आंसर लिखियार थिला 3 आवर भितरे बट टाइम हैज चेंज्ड आज कोन अछि 1 मार्क क्वेश्चन मध्ये पडुछि 2 मार्क क्वेश्चन मध्ये पडुछि 3 मार्क क्वेश्चन मध्ये सेमानकर आसुछि एमिति आ लॉन्ग टाइप रो सेमाने आ लेखु नांदी आज काली ओके तो कोन पे एसे टाइप ऑफ कोन पे चेंज होछि इट कैन बी assessed only by teacher or competent professional it may not provide a true picture of the comprehensive level of the learner focus on learning broad concept and articulating relationship good verbal ability even in the absence of the relative point कोटा हबो ए भितरु essay type of the essay test possesses relatively low validity and reliability काहे कि ये low validity and reliability because learner कोन करछि फोकस करछि ଗୋଟେ broad concept and सेही अनुसार से कोन करछि ताको कोन करछि पॉइंट आउट करि करि चलछि ओके आमे माने जानिथियो कोया था कि नै मु जाननी आमे कोन करथले इंट्रो टा को बढ़िया लिखथले एंड लास्ट टू कंक्लूजन भल लिखथले एंड डिस्क्रिप्शन मझरे कोन करथले टिके टिके भल टिके टिके एमसेन लिखले भी ऐसे टाइप रे काम चल जाउतला बट एटा रिलायबल की नाही रिलायबल नुह नेक्स्ट सीसीई विषय पचारला सीसीई का ऊपर एम्फसाइज करछि हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व फर्स्ट पॉइंट रे ही अछि सीसीई रो एटा कोन डेफिनेशन एम्फसाइज ऑन हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व्ड रिकॉर्डेड एंड इंप्रूव्ड अपॉन ओके आ गुडा ऑप्शन पढिया भी आवश्यकता नाही फर्स्ट रो ही जणा पड़ जाउछि नेक्स्ट कोन कहला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट
practices will bring out the best student ए भितर कोटा बेस्ट से कहूँ ऑप्शन कहला when student are required to reproduce fact as test via multiple choice question when the emphasis is laid upon positive correlation between test score and student ability when the mark obtained and the position secured by the student in the class are the ultimate determinant of success when conceptual change and student alternative solutions are assessed through several different method of assessment एटा जोड़ा कहला पूरा क्लियर जना पड़ जाउची ओके पूरा क्लियर जना पड़ची देखो सेवराल डिफरेंट मेथड अनुसार हम कोन करछे एसएसबी करछे एंड कॉन्सेप्चुअल चेंज मध्ये हमर रहउची ठीक अछि स्टूडेंट को अल्टरनेट सॉल्यूशन भी दिया होची ना तो सेही अनुसार ये ही जो पूरा एप्रोप्रिएट आंसर देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल material resource for education obviously sponsorship alumni endowment intellectual property ये तो जान ना पूरा clear जाना पड़ जाओ जो sponsorship then motivation is the stimulation of the action towards a particular objective where अच्छा ये कौन को जो definition कोई चीज stimulus action towards the particular object बर्नार्ड definition रा कौन बुझा वो किसी नहीं सेटा मन रखिया थोड़ा ता आगे से रास्ता नहीं then 115 which of the following is not a characteristics of critical pedagogy ए भितर critical pedagogy रो कोडा characteristics नुह to empower student to help themselves to subjugate student by oppression to promote emancipation and intellectual growth to center its practice on community and collaboration देखो positive जदि हम देखिवा ए तीनटा आगे positive अनुसार अछि तो ऑब्वियसली नॉट अच्छे माने यही थियो ओके ऑप्रेस्ड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स देन राउसेस थ्योरी ऑन एडोलेसेंस वाज क्रिटिसाइज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट बिकॉज राउसेस थ्योरी जदि पढिथिया ताने हम पढिचे जे तांके कोन कहचंदी ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट नॉट बेस्ड बोली कहचंदी ओके इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट केबे हबो की पॉसिबल नाही जेतरा हम एडोलेसेंस अनुसार हम पढुचे तो ऑब्वियसली डाबो बा जदि हमकु एटा बुझलानी आम ऑप्शन बाकी जाओ देख दबा इट वाज नॉट प्योरली फिलोसॉफिक इन नेचर हबनी केबे भी ही वाज ए डिवोटेड पेरेंट्स केबे हबन एडोलेसेंस रो से प्रकार कैरेक्टर नाही ही डिड नॉट एनालाइज द सेल्फ एक्सप्रेशन ऑफ चाइल्ड लागुची की नाही एप्रोप्रिएट आंसर जना पड़ बेले बेले कोन होय ऑप्शन पढ़ले भी जना पड़ जाय कोन हेतु आंसर नेक्स्ट which of the following not a guideline for the teacher to develop problem solving qualities of learner ask the student if they are sure they understand the problem encourage attempt to see the problem from different angle pose a question and let student try to find the answer take heuristic एटा देखले जना पड़ जे कोन हबो हमें कोन करछे तांको डिफरेंट क्वेश्चन दोचे गुटे एग्जांपल बुझे साला पर जो द्वारा कि तांकर कोन होची पूरा क्लियरली कोन हेउची आईडिया होची बट इट कोन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गाइडलाइन फॉर द टीचर टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एटा कोनसी गाइडलाइन नहीं बट यू आर डूइंग दैट ओके जो द्वारा कि अंडरस्टैंडिंग तांकर क्लियर हबो नेक्स्ट ongoing process of arranging information and experience into mental system of the category एटा ऑर्गेनाइजेशन समझ जानजन दे एटा बहुत इजी नेक्स्ट which part of the brain is involved in the higher cognitive process cerebral cortex ये कौन करछि higher cognitive process रो brain रे यूज होछि next question गला which of the following is a benefit of peer assessment रो benefit कौन it can assist in deepening the student's own perception it help narrowing the gap between one imagined view of teaching and what actual ये बहुत appropriate लागुची देखिया बाकी जाको it helps student towards understanding the observation of process ना it make a student to become more independent learner ना इडार लागुनी तो ये ही more appropriate लागुची and ये ही आंसर ठीक अछि next which one of the following situation is illustrate of a child centered classroom कोटा को भितरु child centered classroom को आजो class in which the teacher dictate and student are asked to memorize एमते क्वेश्चन आसला माने ये जानि दियो नेगेटिव कथा कहूची a class in which the textbook is the only resource ना केबे भी हबनी काहे कि
खाली बहुत किसी जिनस टेक्स्ट बुक अनुसार कही हेनी टेक्स्ट बुक लिखाई तो आम किसी इमाजिनेशन करें बुझाऊे ए क्लास इन व्हिच द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट इज गवर्नड बाय द रिवॉर्ड पनिशमेंट ना ए क्लास इन व्हिच द स्टूडेंट आर सिटिंग इन ग्रुप एंड टीचर टेक हाँ यहाँ ठीक लगे माने आम कौन कर ग्रुप कर पढ़ाऊे ना से भितर गोटे ग्रुपिजम कर पाठ पढ़ाऊे जो द्वारा कि कौन हे क्लीयरली अंडरस्टैंडिंग से भितर देन कहीं आम क्लास रे एमती तो ना समस्ते टैलेंटेड थे केते जन टिके एवरेज थे के जन बिलो एवरेज थे के जन हाईली टैलेंटेड थे ठीक अच्छे तेणु आम कौन कर ग्रुप करके कैपेसिटी अनुसार देले ऑटोमेटिकली भीतर कौन आस डेवलपमेंट आसो अकॉर्डिंग टू मैकडुगल्स व्यू नेगेटिव सेल्फ फीलिंग इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टिंक्ट देखो एक्विजिशन सेल्फ एसर्शन रिपल्सन ये सब पॉजिटिव आसुची बट ये कौन कहला नेगेटिव कथा कहूँ तो आंसर हम कौन सबमिशन मु निजको सबमिट करदेली ओके एनसीटीई एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी came into existence in pursuit of the NCT Act एटा केबे आस्तिला ये आस्तिला अगस्त 1995 ओके 17 अगस्त 1995 नेक्स्ट फाउंडर ऑफ क्रिटिकल पेडागोगी पॉल फेरे देखो इरासोर भी अच्छी इरासोर मार दोनी ये होची गोटे कोन एजुकेटर फाउंडर किए पॉल फेरी बा फेर चलो नेक्स्ट कौन कहला which of the following is not a characteristics of blueprint ए क्वेश्चन माने प्रत्येक वर्ष रिपीट होला बेला होची ठीक अछि characteristics of blueprint पूरा स्टार मार्क मारी रखि दियो ए क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करी पड़े जाओ ए ब्लूप्रिंट characteristics प्रत्येक क्वेश्चन रे आछ प्रत्येक थरा ठीक अछि तो कौन कहला कोटा नाही से कौन कहला वेटेज आर गिवन टू ऑब्जेक्टिव्स एंड कंटेंट देन कौन कहला वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ मार्क a two-dimensional chart it produce a link between test item and paper settler policy decision कोटा एरो characteristics नाही तो एटा को एंगल रु मध्य ठीक बडा लागु नै it produce link between test item and paper settler policy decision एटा केबे लागु छि कि appropriate लागु छि कि ओके ये केबे भी हबनी ठीक अछि आमे कोन करछे ब्लूप्रिंट रे हमर कोन रहउची ऑब्जेक्टिव रहउची कंटेंट रहउची टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रहउची ओके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एटा सब जगह वेटेज आमे ए तीनटा जिंसो ही तो दोचे ना तो ये पॉलिसी कथा कोठ आसला एठी नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटीन्यूअस असेसमेंट कंटीन्यूअस असेसमेंट रो कोटा होची मेन ऑब्जेक्टिव टू फाइंड आउट द extent to which the objective have been achieved to discover how far the learning experience in the classroom have proved effectively to learn how successfully the aim of the education have been fulfilled to help the learner to understand their progress in learning एटा पढिले ही जणा पड़ जाउची जे ये ही हेतिबो हम कोन करछे तांकर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोग्रेस पई हम पाठ पढोजे ना क्लासरूम इफेक्टिविटी ए सब जिंस तो बाद में आछी ओके मेन हमर कोन रुचि केमती हमर लर्नर कोन हो अंडरस्टैंडिंग करिवो एंड अचीव करिवो देन बिहेवियर इज द movement of an organism or part in a frame of reference provided by the organism itself or by external object or field of force which theory of अच्छा एटा को थ्योरी ऊपर पचारछि बिहेवियर कथा जेतोले आसुछि मूवमेंट ऑफ द organ itself ऑप्शन कहला एसआर थ्योरी सिस्टमिक बिहेवियर कंडीशनल एटी आसला ओके ओके ऑपरेंट एटा कार कथा कहूँ स्किनर कथा कहूँ ठीक अच्छे ये जो क्वेश्चन होचे का ऊपर बेस्ड ऑन स्किनर ओके बीएफ स्किनर रो स्टोरी ऊपर ये पचारछि बिहेवियरल थ्योरी मध्ये तांकर रहउछि ओके चलो नेक्स्ट कौन कहला व्हिच असेसमेंट इन्वॉल्व स्टूडेंट इन द कलेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ मटेरियल टू इंक्लूडेड फॉर एग्जामिनेशन चेकलिस्ट पोर्टफोलियो रेटिंग स्केल रुबिक्स पोर्टफोलियो हम पोर्टफोलियो देखछे गुटे स्टूडेंट रो ओके को अनुसार तार परफॉर्मेंस रहउछि देन नेक्स्ट कौन कहला द फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स छोटो करिया द फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ international conference on educational planning held at Paris 1968 except to examine critically the experience of educational planning over the past 10 years to assess the major tendency अच्छा अच्छा एडा ये हमरो कोडा कोचन सेरा
क्रिटिकल पेडागोगी सहित ये रिलेटेड ओके टू एसेस कोऑपरेटिव नॉट कोई की मेन ऑब्जेक्टिव टू एसेस कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप एंड डिफिकल्टीज ऑफ इम्प्लांटिंग मल्टी-एज एजुकेशन ओके टू डेवलप प्रैक्टिकल गाइडलाइन फॉर हेल्पिंग इंडिविजुअल नेशंस ना एडा ही परिवने काइना थ्योरी फॉर एग्जांपल न्यूटन्स थ्योरी प्रैक्टिकल गाइडलाइन अनुसार समस्त सब देश रे सेम ही रहइबो सब नेशन रे टू एग्जामिन क्रिटिकली द एक्सपीरियंस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग ओवर द पास्ट 10 ईयर एमती तो कुठी लेखाई नथियो जे स्पेसिफिक गुटे टाइम पीरियड भितर ही हितियो स्टोरी टू एसेस मेजर टेंडेंसी एंड प्रॉब्लम with which educational planning is likely to have to deal in the next 10 year एमती कुछ तो नथिबो केबे भी past 10 year present 10 year next 10 year नहीं तो ultimately answer is this. Next, score based on statistical comparison of the individual performance with the performance of other. अच्छा जनको से तो comparison करा होची comparison एटा deviation IQ होगा comparison ठीक अछि आ IQ कौन कहला intelligence quotient IQ mental age by chronicle age into 100 के देथिले विनीत देथिले एटा ठीक अछि. Next, which of the following in which type of educational management teacher get proper scope for evaluating the assessment जदि स्कोप कथा कहिची टीचर माने फ्रीडम एठी मिलची माने गोटे जगह रे ही मिल परियो जोटी डेमोक्रेटिक अछि ओके डेमोक्रेटिक रे ही ताकू कोन होबो प्रॉपर्ली फ्रीडम मिलिबो सोजा काम करिया पे. देन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कैरेक्टरिस्टिक्स बाय वैल्यू which is one of the objective of Bloom taxonomy. वैल्यू कोई ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू माने इफेक्टिव हो. ब्लूम टैक्सोनॉमी तीनटा कैटेगरी कॉग्निटिव इफेक्टिव एंड साइकोमोटर वैल्यूज ए सब जिंस जेतर आछी आंसर हो कोन इफेक्टिव. नेक्स्ट, although approximate chronological age are attached to stages children pass through them at different अच्छा ये पचारची chronological age अनुसार चिल्ड्रन रो डिफरेंट ग्रुप रे आसला बेलको डिफरेंट पार्ट अनुसार से काम करछि लाइक एसपीसीएफ मने पड़छि फास्ट सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल ए प्रकार काम होछि तो थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट अनुसार जाछ तो ये पियाजेट कथा कहउछि ठीक अछि का कथा कहउछि पियाजेट कथा कहउछि ये. नेक्स्ट, which of the following is a guideline for the teacher to deal with the learning disabled students. अच्छा disabled student नहीं ओके चलो कौन कहला banking assignment into very small step makes sure student are being reinforced for their success work on the learning problem directly. तो देखिया गले सब जगह तो ठीक ही लाउची जेहेतु से डिसेबल्ड स्टूडेंट तो ये हो आंसर ऑल ऑफ द अबव. Next, a child reason you do this for me and I will do that for you. अच्छा या तो मु करबी या फिर तू करे या तो मु करबी टाइप. In which stage of the Kohlberg moral region would this child fall? को टाइम रे ए प्रकार जिंस चाइल्ड रो माइंड रे चली थी you do this for me or I will do that for you. तो मोर पाई करे नले मु तो भाई आ किछ करबी तो गुड बॉय तो बैड बॉय ता तो केबे आइबोनी ठीक अच्छे. इंस्ट्रूमेंटल पर्पस तो होनी पनिशमेंट तो होनी तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी होनी ना मो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये होनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के हबनी ठीक अच्छे. तो गोटे ही बढ़ला गोटे ही बढ़ला एटा ओके. द इंस्ट्रूमेंट पर्पज ओरिएंटेशन इंस्ट्रूमेंट पर्पज माने गोटे पर्पज यू विल डू फॉर मी एंड आई विल दैट फॉर यू ओके. म्यूचुअलिज्म भी कहबो तू मते परीक्षा रे 1 नंबर देखा मु तो 2 नंबर देखेबी लाइक दैट ओके. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गाइडलाइन फॉर एनकरेजिंग क्रिएटिविटी ए भीतर कोडा क्रिएटिविटी रो गाइडलाइन नुह नॉट होई हला फर्स्ट नॉट बाय अंडरलाइन करिया. आस्क स्टूडेंट टू सपोर्ट डिसेंटिंग ओपिनियन ओके. यूज ए क्लास ब्रेनस्टॉर्म मध्ये से या कथा कहूछ हमरो कौन कहते क्रिएटिविटी कथा कहूँ ओके. गिव अनग्रेड असाइनमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. डोंट रीइनफोर्स ए पैटर्न ऑफ टेलिंग सीक्रेट कोटा गाइडलाइन नुह अच्छा एटा नथिबो. डोंट पैटर्न ऑफ टेलिंग सीक्रेट ऑब्वियसली आमे को प्रकार अनुभूति अछि हम माइंड सेटा जदी न कहबा ताले से केनी ता माइंड क्रिएटिविटी कोड आसीबो केबे भी आसीबोनी. According to Piaget, the ability to infer a relation between two objects based on knowledge of their relation with a third object.
अच्छा टू ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन थर्ड अच्छा ये हला कोन तमर कंक्रीट लॉजिकल कथा ये कहूची ओके ये लॉजिकल कथा कहूची ये हला लॉजिकल हला ये हला कोन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ठीक अछि एसपीसीएफ नेक्स्ट देखिवा who was suggested that people are motivated by hierarchy of need beginning with basic psychological requirement and moving up to need of self fulfillment एटा डेफिनेशन कथा कहछि मैस्लो कथा कहछि सेल्फ फुलफिलमेंट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ठीक अछि स्टार्टिंग कोन होछि साइकोलॉजिकल नीड होछि मैस्लो रे ए प्रकार अछि ना हायरार्की सब टू ऊपर कोन होछि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन देन assessment for learning takes in accounting the following except qualitative improvement in learning style of student, develop personal skill, mistake and strength of the student. Assessment for learning कथा एटी कहछि assessment for learning माने ongoing day to day basis हला ये होछि कोन day to day basis ongoing जोटा चलथियो and it can be modify आउ improve मध्ये करियबो तो develop personal social skill ठीक अछि ठीक कोन होछि पर्सनल एंड सोशल स्किल डेवलप होछि रोल ऑफ टीचर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल पेडागोगी इज आर टीचर रो कोन काम क्रिटिकल पेडागोगी रे डेवलपमेंट रे देखो क्रिटिकल पेडागोगी क्वेश्चन भर्ती आछी हला देन कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग प्रमोट गुड सिटीजन क्वालिटी फॉर फ्यूचर सोसाइटी देन कोन कहला डेवलपमेंट ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ लर्नर ये तो सब ठीक लाउच कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव यस प्रमोट सिटीजन क्वालिटी यस फ्यूचर सोसाइटी डेवलपमेंट कैपेबिलिटी ऑफ लर्नर यस आंसर ऑफ ऑल ऑफ द अबव ए सब जा टीचर रो ही काम ए ग्रेडिंग सिस्टम इन व्हिच टीचर बेस असेसमेंट डिसीजन अबाउट एन इंडिविजुअल वर्क ऑन कंपैरिजन विद द वर्क ऑफ peer is classified as norm reference criterion competitive none of these कौन कहला grading system in which teacher based on assessment decision based on individual work हाँ एटा हबो नॉर्म ये कौन को रिलेटिव उनसे को रिलेटिव ग्रेडिंग कथा ये कोची रिलेटिव ग्रेडिंग कथा कोची जोडा की नॉर्म आ ये होची कोन हमर जनरली एब्सोल्यूट क्राइटेरियन हले कोन हले एब्सोल्यूट ठीक अछि एब्सोल्यूट ग्रेडिंग तो आंसर हबो नॉर्म रेफरेंस चलो नेक्स्ट at which phase child cannot solve a problem alone but can be successful under the guidance in a collaboration MKO मने करो जण को साइकिल चले बुझु नाही गोटे चाइल्ड को ता फादर कोन कला से साइकिल को होल्ड करी किछ समय रहला जो द्वारा कि से किछ समय चले पारिबो ठीक अछि तापर कोन पूरा जीवन जाग एमति धरि कि फादर ठियाइथियो कि नाही तापर छाड़ दबो से ऑटोमेटिकली कोन करिवो तापर चलिवो ठीक अछि तो आंसर हबो ZPD जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ठीक है आंसर हम जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट MKO से तो रिलेटेड दैट वन ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट असेसमेंट एज लर्निंग एक्सेप्ट टेलिंग स्टूडेंट टू टेक इंटरनल फीडबैक निजको पचारो generating a self environment for student to take chance okay tell student to reflect on the topic taught testing student as frequently as possible तो आर आंसर हो एटा कोन कहू असेसमेंट एज लर्निंग ठीक अछि असेसमेंट एज लर्निंग कहू तीनटा हमर रहउछ ना असेसमेंट फॉर लर्निंग ऑफ लर्निंग एज लर्निंग ठीक अछि असेसमेंट फॉर लर्निंग रहउछ ऑफ लर्निंग रहउछ आउ असेसमेंट फॉर लर्निंग रहला ऑनगोइंग प्रोसेस डे टू डे लाइफ जोटा ऑफ गोइंग होछि ये कोन पूरा इंफॉर्मेशन दबो चाइल्ड रो कोन अचीवमेंट हेछि एज लर्निंग कोन रहउछ असेसमेंट एज लर्निंग जोटा रहउछ ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग ओके लाइफ लॉन्ग लर्निंग जोटा कि स्टूडेंट को सब बेल पई हेल्प हो थ्रू आउट द लाइफ ओके तो आंसर हो एटा देन 144 कोन कहला इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर देयर इज नो वर्स nuisance than a boy at the age of 14 if he talk with a childish he is called a baby and if he answer in a grow up way he is called an impersonate who view was it at a car माने जतले एडोलेसेंस एज आसी माने से टाइम रे जदि से किछि पिलालिया में जदि कला हम ता कोचु पिलालिया में भळिया होची जदि से किछि बड़ लोक भळिया आंसर दला ताला हम कोचु अरे कोन तू एतो बड़ लोक कोन भळिया कोन कथा कोचु तो बीच का स्टोरी ही जाउची ठीक अछि तो एडा के कहितले
रवींद्रनाथ टैगोर कहते ये पीरियडटा बहुत आम निजे कन्फ्यूज अच्छु चलो नेक्स्ट कौन कहला एमसीक्यू आइटम द प्रॉब्लम पार्ट एमसीक्यू कौन जाए भी है कि तार प्रॉब्लम पार्टा स्टेम ठीक अच्छे मैचिंग रे मध्य मैच ए मैच बी है प्रॉब्लम पार्टा स्टेम ठीक अच्छे देन व्हाट डू यू मीन बाय रूल इजी मेथड टीचर और लर्नर बाय मूविंग फ्रॉम स्पेसिफिक एग्जांपल टू जनरल रूल टीचिंग और लर्निंग बाय मूविंग फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल टू स्पेसिफिक एग्जांपल राइट एडा ओके रूल इजी है कौन टीचिंग एंड लर्निंग कौन हम मूविंग फ्रॉम ए जनरल प्रिंसिपल किसी गोटे प्रिंसिपल रू नहीं कि गोटे स्पेसिफिक एग्जांपल दे बुझेबा ठीक अच्छे नेक्स्ट कंडीशन इन्वॉल्विंग रेंजिंग ऑफ मोटर और कोऑर्डिनेशन डिफिकल्टीज ड्यू टू ब्रेन डैमेज अच्छा ब्रेन रो जो सेंसर जाक अच्छी डैमेज हम ओके ब्रेन डैमेज ताको हम कौन कहते सेरेब्रल पाल्सी ब्रेन रो प्रॉब्लम एडा देन whose name is strongly associated with the apparatus of puzzle box Skinner Pavlov Thorndike Tolman ये भीतर किए देखो puzzle box अनुसार जो देखिए दिजन जाउची Skinner मध्ये जाउची Thorndike जाउची किंतु Skinner को हमें कौन बोली कहूचे Skinner box बोली ताकुआ जाए ठीक अच्छे कौन बोली कहूचे Skinner box कहूचे Thorndike को हमें कौन कहूचे puzzle box ओके तो आंसर हो C then school based management is a way for forcing individual school to take responsibility for what happened to the children under their jurisdiction अच्छा एडा statement based आंसर हो केंदोली statement based explanation करियर किछि नै then कौन कहला which of the following does not contain school development planning estimates does not कह देला ओके देखले जमा पड़ जाउची फ्री टेक्स्ट बुक एंड एडिशनल कॉस्ट एज पर द स्पेसिफिक इन शेड्यूल फ्री टेक्स्ट बुक ये सब जाको स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग अनुसार ये जाउनी ओके ये ता अंडर जाउनी स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग रे एटा जीवो ट्रेनिंग जीवो टीचर मानकर क्लास वाइज एनरोलमेंट जीवो केते हला फिजिकल रिक्वायरमेंट कोन कोन रहउची ए सब जिंसा को जीवो ओके बट फ्री टेक्स्ट बुक दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द स्कूल डेवलपमेंट प्लान ओके तो ये गला 150 टोटल क्वेश्चन जहा रहिला ओके जति क्वेश्चन हमर थिला टोटल 50 क्वेश्चन हम एठी प्रैक्टिस कर देले अच्छा जहाँ हमें देखुचे प्रीवियस क्वेश्चन अनुसार केतरा टॉपिक मु कहि दूची ता ऊपर भल्ला बरे देखि गले एग्जाम रे बहुत हेल्प हो गोटेला मैस्लो भल्ला बरे देखि दियो मैस्लो देन ता परे देखि दियो मैस्लो परे क्रिटिकल पेडागोगी ऊपर श्योर क्वेश्चन आसी पियाजेटंकर एसपीसीएफ ऊपर श्योर क्वेश्चन आसी एंड ब्लूप्रिंट कंफर्म क्वेश्चन जहाँ आसुची एति भितरु कंफर्म क्वेश्चन आसुची ठीक अच्छे एति रु कंफर्म क्वेश्चन आसुची मैस्लो क्रिटिकल पेडागोगी पियाजेट बाकी सब तो आसुची बट एति रु कंफर्म क्वेश्चन आसुची प्रत्येक वर्ष आसुची तो टिके ए जिंस को भल भाव आम कौन करवा प्रैक्टिस करके जीवा ओके जदि भल लगी थिवो एक्सप्लेनेशन लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे निहाती जोड़ा कि एसेंशियल फॉर मी ओके जो द्वारा कि मते गोटे मोटिवेट मिलिबो थैंक यू।